तो कहा को आमे जेनेटिक मटेरियल बोलिका कहबा। तो जेनेटिक मटेरियल डेफिनेशन कौन? तो डेफिनेशन आसला देखा। तो जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस व्हिच नॉट ओनली कंट्रोल द फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म that can also replicate and pass from a cell to its daughter cell. So there are three terms. So genetic material is a substance which not only control the formation. तो genetic material कौन करे? तुम्हारा कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन ने हेल्प करूथिला बेले आउ कौन करे? तार एग्जैक्ट से निजु को रेप्लिकेट बा कॉपी फॉर्मेशन करि पारे, जोटा कि पास करे फ्रॉम वन सेल टू इट्स डॉटर सेल और टू द नेक्स्ट जेनरेशन, वन सेल टू इट्स डॉटर सेल एंड इन सब्सिक्वेंट जेनरेशन जेते जेनरेशन आसीबो से निजको पास आउट करि परिबो फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन. तो अगेन आई रिपीट, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग, इट हैज द कैपेसिटी टू regulate the construction of the character and its expression. Character of formation karibo, character expression karibo. Gene has the capacity to replicate itself. Genetic material has the capacity of auto replication. It has the capacity to replicate itself, means it form it exact copy and transmit from cell to cell and inherit itself or transmit itself from generation to the generation or from one generation to the another generation. Then what are the characteristic feature of a genetic material? Means the characters which fulfill by a genetic material. जो character जदि से character उडा fulfill न हुए ताल तक हमें genetic material कहिबा नाही. ताले गोटे genetic material must follow these characters. So the first character is it should present in every cell. तो genetic material is present each and every cell, means each and every cell contain genetic material. Second, it amount should be same in all somatic cell. तो तार amount ता कौन होची? तार amount gene रा amount ता its amount should be same in all somatic cell. तो सबु vegetative cell रे somatic cell बा vegetative cell ले gene रा amount समान रहिबो. Why? Because all the somatic cells follow mitotic division or equational division. Though it follow equational division, so all cell contain equal number of genetic material or equal amount of genetic material. Next point, it should show diversity in variety of organism. So there are different types of organism or different varieties of organism found on the earth surface. आम अर्थ सरफेस रे बहुत गुडी डिफरेंट वेराइटी ऑर्गेनिज्म रहउछथि. तो ऑर्गेनिज्म जेहेतु वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा होछथि, तो सेमानक भितर थिबा जीन कंटेंट भी अलगा अलगा. तोरो जीन ने भी हमर कोन देखा जाय? वेरिएशन देखा जाय बा डाइवर्सिटी फॉर्म देखा जाय. जेहेतु डिफरेंट ऑर्गेनिज्म माने हम अर्थ सरफेस रे अछथि, तो सेमानकर जेनेटिक पैटर्न भी अलगा हिथाय. Next कहला, it has the capacity of replication. Already I told what is replication. Means formation of exact copy is known as replication. And a gene has the capacity of auto replication. Gene निजर कौन करछि? निजको निजे exact copy formation करि पारुछि. Next असला, it should able to inherit inheritable changes. तो gene sometimes do certain changes inside it. This is known as automatical changes, and these automatical changes is known as, or sudden change is known as mutation. This mutation allow the organism to adapt a particular environmental situation, better adapt a particular environmental condition. What is adaptation? To exist properly in a proper environmental condition or to the existing environmental condition. गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन ने गोटे ऑर्गेनिज्म केमिति बेटर सर्वाइव करिवो. बेटर सर्वाइव कैपेसिटी इज नोन एज अडैप्टेशन. गोटे ऑर्गेनिज्म केमिति गोटे जगह रे बेटर सर्वाइव करिवो सेटा उतार अडैप्टेशन बेलिका कहा जाय. ए अडैप्टेशन कहा जोगु आसे? जीन जेनेटिक मटेरियल चेंजेस जोगु आसे. जो जेनेटिक मटेरियल चेंजेस को कोन कहा जाय? म्यूटेशन बेलिका कहा जाय. which also help in evolution of the organism. जोटा ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन करिबारे हेल्प करे बा नुवा ऑर्गेनिज्म रा फॉर्मेशन ने हेल्प करे. लास्ट पॉइंट कहला, इट शुड बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म. तो जीन ने जहां सब कैरेक्टर रिलेटेड
इनफॉरमेशन थाए सेटा केमिति स्टोर हेगी थाए कोडेड फॉर्म रे स्टोर हेगी थाए एंड कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन तो जो इनफॉरमेशन गुड़ा कौन करती सबू जाक बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करती सो in previous time there was a battle between the genetic material that is the nucleic acid and protein तो nucleic acid protein भीतर गोटे battle चलथिला which one is genetic material तो finally it is concluded that the genetic material is the nucleic acid that is DNA and RNA but protein do not fulfill all the criteria because protein do not have the capacity of auto replication so finally we conclude that the genetic material is the nucleic acid DNA that is DNA or RNA okay so specially in the next class we discuss about the nucleic acid and the DNA